और कुछ एमसीक्यूज करने हैं। यस, तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था, लास्ट टाइम वी हैव सीन एमसीक्यूज बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, and we have seen that how the proportionality problems can be solved very easily by using some simple methods. तो proportionality problems मतलब अगर मान लो कि एक क्वांटिटी y दूसरे क्वांटिटी x के साथ अगर प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट या इनवर्स कोई भी प्रोपोर्शन में हो सकता है, तो उसमें अगर मान लो कि y प्रोपोर्शनल टू x रेस टू n है, ओके, तो उस केस में क्या होगा कि जितना टाइम्स y बनेगा तो उसके या जितना टाइम्स x बनेगा तो उसके n रेस टू टाइम्स, मतलब रेस टू n टाइम्स y बनेगा। मतलब अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, ओके, ये चलो y इज प्रोपोर्शनल टू x रेस टू n फॉर एग्जांपल, ओके, देन if y become x becomes k times, ओके, अगर x जो है वो k टाइम्स बनता है तो y जो है वो k रेस टू n टाइम्स बन जाएगा। तो ये हमको समझना है अच्छी तरह से, ठीक है। इफ x becomes डबल, अगर x डबल हो गया तो उसमें क्या होगा, y जो है वो 4 टाइम्स या 2 रेस टू n टाइम्स हो जाएगा। ये समझ सकते हो। बट ये याद रखो ठीक से कि परसेंटेज के जो कैलकुलेशंस है दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस, ओके। यस, परसेंटेज के कैलकुलेशंस अलग होते हैं। परसेंटेज के बारे में अगर बात करते हैं तो उसके लिए रूल ये कहता है कि इफ y is proportional to x raised to n and if suppose x increases by p%, okay, then x will increase actually by k raised to नहीं n times of p%। तो ये हमको अच्छी तरह समझना है, ओके। चलो ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द एमसीक्यूज। Okay, I think we have done with this. $37, right? Yes. 38th also was done, right? 39th, let us check. Height above the surface of Earth, at which the acceleration due to gravity is 4% as that of the on the Earth surface is. तो अगर हमको हाइट निकालना है जहाँ पे ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो जितना सरफेस ऑफ अर्थ पे है उसके 4% बनता है। What does it mean? It means that, see here, the acceleration due to gravity at height h above the surface, मतलब सपोज ये अर्थ है और सरफेस पे जो acceleration due to gravity है वो g है, ठीक है। If we get at the height h above the surface, then the acceleration due to gravity will change, right? It will be simply gh there. So it is given that we want to find out this height so that the acceleration of gravity will be 4% of the gravity on the earth surface, मतलब gh has to be equal to 4% of g, ये हमको दिया हुआ है। तो such a height we have to find out। तो उसके लिए देखो gh के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है ऑलरेडी, जो कि तुमको पता होगा ऑलरेडी, r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर इंटू g, करेक्ट है। और अब यहाँ पे gh के बदले अगर हमने ये वैल्यू डाल दिया उसका, जो 4% ऑफ g, मतलब ये क्या हो गया, वो 4/100 टाइम्स ऑफ g ऐसा बनता है। तो ये अगर यहाँ पे डाल देते हो तो ये बन गया
4 by 100 into G is going to be equal to R square upon R plus H का whole square, correct है? And into G as it is, right? So here G gets cancelled from both sides. Okay, so here 4 by 100, yes, 4 by 100 can be written as 1 upon 25, right? This will be actually equal to R square upon R plus H the whole square, correct? And now if we just take the square root on both sides, तो यहाँ पे 1 upon 25 का square root क्या बनता है? 1 by 5. और उस तरफ R upon R plus H the whole square का square root क्या बनता है? Simply R upon R plus H, correct है? Yes. Sorry. And then if we just cross multiply here, then we get this R plus H equal to 5R, right? And since this R plus H equal to 5R, we get this H equal to 5R minus R. And hence H becomes actually equal to 4R. So we can say that the value of height at which the gravity becomes 4% actually becomes 4 times of radius of Earth. And that is going to be the final answer. Okay, तो 4 times of radius of Earth, मतलब अभी देखो Earth का radius कितना होता है? 6400 किलोमीटर होता है. तो उसको अगर हम 4 गुना करेंगे तो कितना बनेगा? 6 4 जा 24 और ऊपर का ये, तो we can select this D as a correct option. 25,000, sorry, 2,53,600 kilometers. Okay. The next one, a man weighs 60 kilogram at Earth's surface. At what height above the Earth's surface his weight will becomes 30 kilogram? So at a particular height, we want the weight to become half of the original value. तो मतलब हमको ये करना है कि फिर से वही फॉर्मूला हमको यूज करना है. GH must be equal to, GH is actually equal to R square upon R plus H का whole square into G होता है, बराबर. अगर हम दोनों तरफ M से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे M से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी M से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो M into GH बनता है उसको हम बोल सकते हैं WH, that is the weight at the height H above the surface, right? And here M into G actually becomes the W, that is the weight at the surface of Earth only. तो जिसका वेट यहाँ पे 30 है, 60 है, ओके, सरफेस पे, तो उसका वेट हमको ऊपर में कितना एक्सपेक्टेड है? 30 होना एक्सपेक्टेड है. तो ये हमने W के बदले डाल दिया 60 और WH के बदले डाल दिया 30, करेक्ट है? जिससे हमको अभी यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद आंसर मिलेगा. तो देखो ठीक से, ये R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अपॉन R प्लस H द होल स्क्वायर, और ये 31 जा 32 जा, तो ये 2 इस तरफ नीचे चला गया, तो हमको मिलेगा 1/2 is equal to R upon R plus H का whole square, correct है? And then if we just take the square root, then we get this 1/√2 is equal to R upon R plus H. And if we just take this cross multiplication here, then we can get this R plus H simply equal to √2R, right? And then H becomes actually equal to √2R minus R. And if we take R common, then we can get this √2 minus 1 into R, so that we can get 1.414 minus 1 into R, and hence we can write this as 0.414 into R, where R is nothing but 6,400 kilometer. So 6,400 multiplied by 0.414, या सिर्फ 0.4 ही ले लो उसको. So what is this 0.4 multiplied by 6,400? 64 into 4 कितना होता है? 256 होता है, बराबर. तो ये 256 ऊपर 2 zeros और एक पॉइंट, एक डिजिट पीछे, तो ये बन गया हाइट. ओके, तो 2560, yes, 2600 approximately, the height will be 2649 kilometer.
because we already approximated this 1.41 0.414, राइट? तो ये 0.414 को हमने डायरेक्ट 0.4 ले लिया ना, तो उससे भी हमको ये आंसर मिल रहा है। तो अगर 0.414 लिया रहता तो इससे थोड़ा ज्यादा आंसर मिलता था, तो वही वहां पे दिया हुआ है। ऑप्शन हमारे सामने है, जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट आंसर एटलीस्ट। यस, नेक्स्ट वन, द रेडियस ऑफ अर्थ is r and acceleration due to gravity on the surface of earth is g. If the body of mass m is sent to the height r by 4 from the earth's surface, then the potential energy increases by, okay, इस टाइप का हमने कल किया था शायद, just check करो। The change in potential energy we have to find out when the body is projected up from the surface to the height r by 4। और इसके लिए रेडीमेड फॉर्मूला भी है, तो मेरे को पता होगा, हमने किया था ये एक्चुअली थ्योरी में डिस्कस करने के टाइम। they would say the change in potential energy when the body is thrown up from the point on the surface of earth to the point on the height h above the surface is given by, yes, check, तो ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द बॉडी इज लिफ्टेड अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू द हाइट h अबव द सरफेस। बट अभी यहाँ पे अगर चेक करते हो ठीक से तो पता चलेगा कि हाइट इज गिवन हियर टू बी r by 4, करेक्ट है? ये देखो r by 4 हाइट दिया हुआ है, तो अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा h इज इक्वल टू r by 4 हमको डालना है, तो इससे हमको डेल्टा u का वैल्यू क्या मिलेगा देखो से, तो वो हमको मिलेगा m इंटू जी इंटू r by 4 अपॉन 1 प्लस r by 4 डिवाइड by r, करेक्ट है? So r gets cancelled and what we are left with is delta u is equal to mgh, मतलब mg into r by 4 divided by 1 plus 1 by 4, and if we just simplify this further then we get this mgr by 4 upon 5 by 4, okay, 4 gets cancelled and what we are left with is simply mgr upon 5, that's it. Okay, so mgr upon 5, this is actually going to be the final answer, which is there in option number B here. Okay, what will be the weight of the body on the surface of earth, center of earth? 0, because we know that the acceleration due to gravity at a depth d below the earth's surface is given by the formula gt equal to g into 1 minus d upon r, करेक्ट है? सो इसमें अगर d इक्वल टू r बन जाता है, देखो मतलब अगर हम सपोज अर्थ के सेंटर पे अगर पहुंच जाएंगे तो कितने डेप्थ पे पहुंचेंगे, तो दैट डेप्थ विल एक्चुअली बी इक्वल टू सेम एज द रेडियस ऑफ अर्थ, राइट? सो इफ यू पुट दिस d as r, then we can get this gd to be simply equal to g into 1 minus r upon r, मतलब ही वो बन गया 1 minus 1, so gd becomes actually equal to g into 1 minus 1, so it is going to be 0. So hence we can say that the acceleration due to gravity on the surface of earth is going to be, center of earth is going to be 0. Yes, next one. A body released from the height h takes the time t to reach the earth's surface, okay? The time taken by the same body released from the same height to reach the surface of moon is, तो मतलब अगर कोई बॉडी जो है वो हम अर्थ के सरफेस पे अगर एक h हाइट से अगर रिलीज करते हैं तो t टाइम के अंदर नीचे गिरता है, तो अगर हमने सेम एक्सपेरिमेंट मून पे परफॉर्म किया तो क्या होगा, तो कितने टाइम के बाद वो नीचे गिरेगा, तो वो हमको ढूंढ के निकालना है। देखो ठीक से, अभी एक बात तो हमको क्लियर है कि द हाइट from which the body is released and the time after which it falls back on the surface is related by this equation h is equal to half gt square. Remember,
we have done it in the motion in plane. Motion in plane chapter के अंदर हमने ये already देखा है कि whenever a body is released from the height h above the earth surface, then it falls back on the earth surface in a time t, which is given by this formula. तो इस formula को थोड़ा अगर rearrange करेंगे तो ये 2h उस तरफ चला जाएगा, तो 2h becomes equal to g into t square. If we take this g also in the denominator, then we can get this t square to be equal to 2h upon g, and hence t actually becomes equal to 2h upon g का रूट. करेक्ट है, ये बनता है फॉर्मूला. ठीक है, अभी इस टाइम पीरियड जो ये टाइम है, तो इस टाइम को अगर ठीक से देखते हो तो ये टाइम g के ऊपर रूट के ऊपर इनवर्सली डिपेंड करता है. ये समझ सकते हो ठीक से, t डिपेंड्स इनवर्सली ऑन g, रूट ऑफ g. करेक्ट है. और जब हम अर्थ से मून पे जाते हैं तो g का वैल्यू कितना बनता है, 1/6 बनता है. So since g is going to become 1/6 times, what will happen to the time t here? तो टाइम का क्या होगा, it will just become reciprocal root of 1/6 here. तो 1/6 अगर यहाँ पे डाल देते हो तो ये g अगर 1/6 हो जाएगा, तो यहाँ पे रूट के अंदर 1/6 डालने से वो रूट 1/6 बन जाएगा, और वो डिनोमिनेटर में होने की वजह से वो ऊपर जाके वो रूट 6 बन जाएगा. तो it will become root 6 times simply. So the new time will be root 6 times of original one here. Okay, so root 6 times t. So B will be the correct option. The variation of acceleration due to gravity as one moves away from the Earth's center is given by. अब देखो, अगर हम सेंटर से दूर जाते हैं तो acceleration due to gravity का variation कैसे होगा? How can we depict it in the diagram or in the graph? So see here, we will have to think about the two equations for this purpose. दो इक्वेशंस के बारे में हमको यहाँ पे देखना होगा. जैसा कि हम जानते हैं, सपोज दिस इज द अर्थ, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, एंड सपोज वी वांट टू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. So this is the acceleration due to gravity and this is the distance from the surface of center of earth, that is r here. Okay, तो अभी देखो, जब हम अंदर के अर्थ के सरफेस के अंदर वाले पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं तो उनके लिए ये डिस्टेंस d बन जाता है, डेप्थ उसको हम बोलते हैं, और ये जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोल सकते हैं r माइनस डी. करेक्ट है, r माइनस डी, दैट मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ ऑफ द पॉइंट विच इज हियर. तो इसलिए हम ये देख सकते हैं यहाँ पे कि इस पॉइंट पे जो ग्रेविटी बनता है उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जी डी इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डी अपॉन r. करेक्ट है. इसको अगर हम सपोज थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको एलसीएम निकालने के बाद क्या बनेगा, वो r माइनस डी अपॉन r ऐसा लिख सकते हैं. बट हियर r माइनस डी is nothing but going to be small r, that is the distance of the point from the center of earth. So if we replace this r minus d by small r here, then we can get that gd is equal to g into small r upon r. मतलब इसको हम लिख सकते हैं सिंपली gd is equal to g upon r into small r. करेक्ट है. तो ये इक्वेशन जो है वो बिल्कुल हमारा y is equal to mx के जैसा है, जहाँ पे y मतलब gd है जो हमने यहाँ पे y एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ है, और x मतलब यहाँ पे r है जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी x एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ है. तो ये y equal to mx is the equation of a line, straight line, and that's why we can get that there will be a straight line. The graph between this g and d, g and r will be a straight line. But up to what? कब तक ये straight line रहेगा? जब तक सरफेस नहीं आ जाता है. देखो यहाँ पे ये सरफेस के करस्पॉन्डिंग पॉइंट है, तो सरफेस जब तक नहीं आ जाता तब तक ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा, बिल्कुल नो डाउट. बट व्हाट हैपेंस आफ्टर सरफेस? तो जैसे हम सरफेस को क्रॉस करके आगे चले जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, yes, the graph will be get curved. Why? Because the expression for gh, that is the acceleration due to gravity at a height h above the surface, is given by the formula r square upon r plus h the whole square into g. Now if we just see this formula carefully, then
we can say that here GH is inversely proportional to 1 upon r plus h the whole square. तो स्क्वायर के ऊपर इनवर्सली डिपेंड करता है, एंड स्क्वायर के ऊपर इनवर्सली डिपेंड करने वाली चीज का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है, कर्व बनता है. तो इसलिए यहाँ पे उसके आगे का जो ग्राफ है वो इस तरह से कर्व मिलेगा हमको डेरिवेटिव से. So this type of graph will be obtained like this here. So that's why we can just conclude that the graph will be like curved after radius of earth. तो यहाँ पे r के आगे ये ग्राफ कर्व बन जाएगा और r तक क्या है, स्ट्रेट लाइन रहेगा, no doubt. So that's why we can select this C as a correct option here. Okay, let us see it here. The acceleration due to gravity at the equator is 10 meter per second square, and the equatorial radius is 6,400 kilometer for the Earth. If the angular velocity of rotation of Earth about its own axis, so that the weight of the body at equator reduces to 75% is. तो देखो, weight of the body on the surface of Earth on equator must reduce to 75%. तो उसके लिए कितने एंगुलर वेलोसिटी से अर्थ को घुमाना पड़ेगा वो हमको ढूंढ के निकालना है. देखो ठीक से, सपोज दिस इज द बॉडी which is kept on the surface of earth. Okay, so there will be two forces acting on this body. One is the weight of the body which is acting inwards or towards the center, which is equal to mg, and दूसरा फोर्स कितना एक्ट होने वाला, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके ऊपर जो काम कर रहा है, fc उसको हम बोल सकते हैं. And the resultant of these two will be inwards, and that will be actually the apparent weight, we can say apparent weight, which is denoted by mg dash. Okay, g dash stands for apparent gravity. So you can say that the apparent weight will actually be equal to the actual weight minus centrifugal force. करेक्ट है. तो अगर ये बात यूज करेंगे तो हमको मिलेगा apparent weight मतलब mg dash, which is going to be actual weight, which is going to be mg minus centrifugal force, which is nothing but fc. तो अगर ये सब वैल्यूज हम डाल देंगे, बट देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, we want to find out the angular velocity of rotation of the earth about its own axis, so that the weight of the body at equator reduces to 75%. That means apparent weight is going to be 75%, right? That means they would say mg dash is actually 75% of mg. ये दिया हुआ है, जिसका मतलब ये होगा कि mg dash is actually going to be 75 by 100 into mg, जिसका मतलब ये होगा कि 3/4 हो गया ना वो, क्योंकि 25 से अगर रिड्यूस करेंगे तो 25 3s are 25 4s are, and hence we can get that mg dash is actually 3/4 of mg. And if we just replace this value here, then we can get, तो mg dash के बदले अगर हमने डाल दिया ये वैल्यू तो बनेगा 3/4 of mg is going to be equal to mg minus fc, and hence we can get that fc is actually equal to mg minus 3/4 of mg, जिससे हमको मिल रहा है fc is equal to 1/4 of mg. करेक्ट है, 1/4 of mg. And here if we replace this fc also, that is a centrifugal force, by the formula mr omega square, जिसमें m मतलब इस बॉडी का मास, r मतलब उसका सर्कुलर मोशन का रेडियस. तो सर्कुलर मोशन जो है वो उसका रेडियस कैपिटल R ही है, मतलब अर्थ के रेडियस के बराबर है, इसलिए यहाँ पे अर्थ का रेडियस आने वाला है. और ओमेगा मतलब उसका एंगुलर वेलोसिटी अर्थ का रोटेशन का, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/4 ऑफ mg. सो अभी दोनों तरफ से m कैंसिल हो जाएगा, और हमको अगर ओमेगा स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए r को नीचे लेके जाना पड़ेगा उधर. तो ओमेगा स्क्वायर कैन बी फाउंड आउट टू बी इक्वल टू g upon 4r. correct है. And now if we just simplify this and put all the values here, then we get this g as 10 approximately. It's 9.8, but just we can take it as 10 and multiply divided by 4 into r, where r is nothing but 6,400 किलोमीटर, मतलब ये into 10 raised to 3 भी यहाँ पे आ जाएगा. yes,
and then we can say this omega will actually be the square root of this whole thing. इसमें भी क्या है ना, एक 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो एक एक्स्ट्रा 0 है वो उसमें डाल देंगे, 10⁻³ में डाल देंगे, so that it will become 10⁻⁴. So we get this 1/4 into 64 into 10⁻⁴, and then we will be able to find out the square root of this here. That is 1/4 का square root 2, फिर 64 का square root 8, और फिर 10⁻⁴ का square root 10⁻², and then we can say that this 1/16 into 100, मतलब ये वो बन गया 1600, 1/1600 radian per second. This should be actually the angular velocity of rotation of Earth about itself. Okay, that is the A is correct option here. Next is the geostationary satellite has an orbital period of 24 hours. And last is 47th one. A geostationary satellite is orbiting at a height 6 r from the Earth. The period of a satellite revolving at a height 2.5 r from the Earth is. Okay. तो देखो ठीक से, geostationary satellite जो है वो 6 r इतने हाइट पे घूम रहा है, हाइट है वो, it is not the radius of orbit actually, it is height given there. तो अगर हम देखेंगे जो सैटेलाइट, जैसे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो है, इट इज रिवॉल्विंग एट अ हाइट ऑफ 6 r. ओके, और जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का पीरियड कितना होता है वो हमको पता है ऑलरेडी, इट इज 24 hours. करेक्ट है. ओके, और अभी दिया है कि दूसरा सैटेलाइट, द पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट व्हिच इज रिवॉल्विंग एट अ हाइट 2.5 r ओनली फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज. तो मतलब जब हाइट h डैश जो है वो 2.5 r के बराबर बन जाता है, तो उसका पीरियड कितना होगा t डैश, वो हमको ढूंढ के निकालना है. h दिया है, t दिया हुआ है, अगेन h डैश दिया हुआ है, t डैश निकालना है. बेसिक बात यह है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस h एंड t, कैन यू फाइंड आउट? yes, we have the formula for period of satellite, that is t is equal to 2 pi root r plus h the whole cube अपॉन gm. करेक्ट है, जिससे हमने ये बताया था कि t is proportional to root of r plus h the whole cube, right? yes, so जबकि यहाँ पे ये t proportional to root of 2h r plus h the whole cube है, तो नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो, h अगर हमको पता चल गया तो स्मॉल r कितना मिलेगा इसमें से, स्मॉल r1 उसको हम बोल सकते हैं, या r बोल सकते हैं सिर्फ. तो स्मॉल r can be written to be equal to capital R plus h, where h is going to be 6r, right? And since h is 6r, we can say r plus 6r becomes actually 7r. करेक्ट है, तो ये r हो गया. और r डैश के लिए क्या कर सकते हैं, देखो r डैश is actually going to be r plus h dash again, which can be written to be equal to r plus h dash. h dash मतलब कितना है, 2.5 r है. करेक्ट, तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 3.5 r. दैट्स इट. सो ये r डैश बन गया. एंड देन वी कैन जस्ट यूज दिस t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब. सो वी कैन गेट दैट t स्क्वायर अपॉन t डैश स्क्वायर is equal to r cube upon r dash cube, right? And hence you can get that t square upon t dash square. t तो हमको दिया हुआ है 24. That's it. t dash हमको निकालना है, तो ये t dash square as it is. And r cube, r is given to be actually, अच्छा r upon r dash का whole cube भी लिख सकते हैं नहीं इसको. तो अगर वो करेंगे तो r कितना है यहाँ पे देखो, तो r is actually going to be 7r. करेक्ट है, 7 times of capital R. So this is 7 capital R upon, what is this r dash here? R dash is given to be 3.5 r actually. So we can get this 3.5 r replaced here. And then we can just calculate this 24 का whole square upon t dash का whole square is equal to, अब यहाँ पे देखो r r तो कैंसिल हो जाएगा. In addition to that 3.5 का डबल ही तो होता है ना 7. करके देखो, 3.5 को अगर डबल करेंगे तो 7 बनता है. तो that means this 7 upon 3.5 will become 2 only, and cube is already there, so it's kept as it is. So if we just work this out,
then we get this 24 into 24 upon t dash square is going to be 8, right? So if we just cancel this out, 8 ones are 8 threes are, then this t dash square or 24 into 3 becomes actually equal to t dash square, right? And hence we can say that this t dash square becomes equal to 24 threes are, नहीं तो ठीक है, t dash को हम लिख सकते हैं फिर t dash is going to be equal to root of this 24 into 3. How much is this? 24 can also be written as 3 into 8, correct है? Or just write this 24 into 3 as 72, and 72 can be written as 36 into 2, correct है? And 36 का square root क्या बनता है? 6. So we can say 6 root 2. So 6 root 2 मतलब कितना हो गया? 6 into 1.414, that is 14 6 are 78, 7.8. So approximately 7.8 hours. This will be the period of rotation of Earth. देखो इस पूरे को हम एक लाइन में कर सकते हैं, एक सिंपल सेंटेंस में, जबकि हमको यहाँ पे पता चल चुका है कि यहाँ पे स्मॉल आर जो है वो 7 आर के बराबर है और ये स्मॉल आर डैश जो है वो 3.5 आर के बराबर है. तो मतलब यहाँ से हमको पता चल रहा है कि रेडियस गेट्स हाल्व्ड, राइट? रेडियस ऑफ ऑर्बिट गेट्स हाल्व्ड, and since we have that t square is proportional to r cube, which means t is proportional to r raised to 3/2, करेक्ट है? तो अगर r जो है वो अगर हाफ हो गया, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा? t का क्या होगा? t will become 1/2 raised to 3/2 times. ओके, तो पीरियड जो है वो 1/2 raised to 3/2 times बनेगा, and that means the new period t dash here will be 24 into 1/2 raised to 3/2 times, मतलब 1/2 raised to 3/2 only. तो ये अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा? देखो लिख सकते, तो 24 इंटू या अपॉन 2 raised to 3/2 मतलब कितना? 2 का क्यूब होता है 8 और उसका स्क्वायर रूट मतलब रूट 8 हो गया वो, रूट 8. और इसको अगर हम रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे रूट 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? जिससे हमको मिलेगा 24 रूट 8 upon root 8 into root 8 is 8 only. So we get this 8 ones are 8 threes are, and root 8 can be written as 2 root 2. So you can get this 6 root 2, which happens to be actually 6 into 1.4, which happens to be 8.4. No, right. 14 6 are 84. So it becomes actually 8.4 hours, right? Here also we have to get it as 8.4 only, not 7.8. It is going to be 8.4 hours. Yes. So here 8.4 hours will be the correct option. चलो ठीक है. How it is 10 hours? ओके चलो ठीक है. और अगर आपको कुछ डाउट है, जो आपको शीट मैंने शेयर किया था उसमें से अगर आपने कुछ सॉल्व किया है और अगर उसमें से डाउट है तो पूछ सकते हो अभी. यस ओके ठीक है. फिर अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम और एक शीट सॉल्व करेंगे, दूसरा एक शीट और एक सॉल्व करेंगे सेम चैप्टर ग्रेविटेशन के ऊपर, और वो होने के बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर विल बी प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. ओके